Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? Now in today's video we are going to talk about my 5 favorite makeup and skincare products that I've been really enjoying these days. So yeah, without any further ado, let's get into the video. Let's go. If you want to buy any of these products, I will link it in the description box for you to check out, right? And yeah, let's start. So starting off with first things first, let's start with makeup, okay? So this is Swiss Beauty. This is their Studio Finish Eye Base, and this is like an eyeshadow primer. Like you apply this on your eyes before your eyeshadow, and this will help your eyeshadow to pop. Like first of all, उसका color बहुत अच्छा लगेगा, निकल के आएगा, and it helps in effectively blending the eyeshadow. Now if you can see, ये बहुत light color है, and ये मेरी eyes पे almost as a white paint settle हो जाता है. The reason why I got this color was because ये light है. So now जब आप एक light eyeshadow base use करते हो और उसके ऊपर कोई भी color आप apply करोगे तो वो color पॉप करके आता है ना, तो वो कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगा. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई वेंट विद दिस प्रोडक्ट एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड. मुझे एट दिस पॉइंट आई थिंक 2-3 महीने हो गए इसको बाय करे, एंड मैंने इसके साथ इतने सारे मेकअप लुक्स कर लिए हैं एट दिस पॉइंट दैट आई नो इसकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है, राइट? इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, आई वुड से मेरे चैनल पे आप कितनी भी वीडियोस दे सकते हो जिसके अंदर ट्यूटोरियल दिया हुआ है. मैंने ऑलमोस्ट सब में इसको यूज़ किया है एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. ओके, सो फॉर मी इफ यू आर लुकिंग फॉर आई शैडो प्राइमर एंड यू वर नॉट श्योर कि हम क्या यूज़ करें, डेफिनेटली गो विद दिस वन. इफ़ यू आर लाइट स्किन टोन, यू कैन गो विद दिस वन फॉर पेस्टल कलर्स एंड एवरीथिंग. अगर आपकी स्किन टोन डार्क है, इसमें एक्चुअली एक शेड और भी आता है. आई थिंक इसमें 2 शेड और आते हैं, सो यू कैन गिव देम अ ट्राई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट कलर सूट्स यू, राइट? सो दिस वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन. और अब क्योंकि हम स्विस ब्यूटी की बात करते हैं, स्विस ब्यूटी का एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, विच इज दिस डुओ मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी क्रेज. नाउ इस मस्कारा में एक एंड इज दिस वेरी पतला पोर्शन लाइक फॉर योर लोअर लैशेस एंड द इनर corner and everything, and another one is this very mota portion which is again volumizing and whatnot. Let me tell you, when I apply this on my eyelashes, the flutter it gives, the length it gives, the volume it gives, oh my god, this mascara is definitely, you know, I use it every day and it just makes my eyelashes look so good, like fluttery and like butterfly and whatnot. It really looks good and मुझे इतना अच्छा लगता है ना इसको लगा के, like my eyelashes fly, they look sick, okay, and I really like this. मैं personally इसमें ये वाला end ज़्यादा use करना पसंद करती हूँ because ये पतला है ना, तो ये लोअर लैशेस पे और अंदर लग जाता है. बिकॉज जो मोटे वाला पोर्शन जब मैं ट्राई करती हूँ ना, यूजुअली क्या होता है, ऊपर लग जाता है. तो मैं पतले वाला पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ इसके अंदर. बट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली रियली गुड. जब आप एक को अप्लाई करके उसके बाद दूसरा अप्लाई करते हो ना, द लेंथ, द वॉल्यूम इज अनरियल एंड ऑनेस्टली यू रियली नीड टू ट्राई दिस मस्कारा बिकॉज इट्स ऑसम. गिव इट अ ट्राई, definitely. Okay, now let's talk about a skincare product. I have 2 sunscreens for you that I have been really loving. मैंने इस साल की गर्मियों में ये दोनों sunscreens बहुत religiously यूज़ किए हैं, and one of them is this Dot & Key. This is their watermelon cooling sunscreen SPF 50 PA+++, and this is Plum niacinamide and rice water hybrid sunscreen. So this is both a sunscreen and skincare. This is again SPF 50 PA+++, right? दोनों सनस्क्रीन में फर्क बस इतना है दैट प्लम वाली जो है, इट हैज niacinamide to it which will give you the skincare benefit, while this is a plain sunscreen, like it has no benefits of skincare. It's just a plain sunscreen you apply to protect from sun. Both of these, this is a little bit more watery with lesser white cast, this is a little bit thick, a little bit more white cast, but दोनों की white cast over the time, not over the time actually, apply करते ही स्किन में absorb हो जाती है और सारी white cast खत्म हो जाती है. So white cast वाला इसमें कोई issue नहीं है, and they are good sunscreens, like they are really nice sunscreens. This one costed 500 rupees, like 495 की है ये, right? And this one is for 400 rupees, right? And ये 50 grams है, ये 50 grams है. Obviously ये वाली इसके comparison में सस्ती है. Dot & Key is a little bit more costly, but I would definitely recommend you trying any of these. अगर आप थोड़ा dry skin वाले हो, आप thick वाली यूज़ कर सकते हो, go for Plum. Also, अगर आपको स्किन केयर बेनिफिट्स चाहिए तो प्लम वाली वुड बी ऑसम, परफेक्ट फॉर यू. बट इफ यू आर समबडी लाइक मी हु हैज लाइक ऑयली स्किन एंड थिकर सनस्क्रीन, आपको उतनी ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि लाइक बहुत थिक हो जाएगा, यू कैन डेफिनेटली गो विद Dot & Key. मैंने इन दोनों को यूज़ किया है, बहुत रिलीजियसली यूज़ किया, एंड आई एंजॉयड बोथ ऑफ देम एंड आई लव बोथ ऑफ देम. आई वुड हाईली रिकमेंड दीज टू यू. यू कैन डेफिनेटली गिव देम अ ट्राई.
And the last product that I have for you is a lip tint, and this is from Rome and this is their Zero Velvet lip tint. Let me show you how it looks. This is how it looks. It's a very pretty packaging, very pretty bottle, and it has a very pretty color. This is a velvet tint. तो ये बिल्कुल मूस की तरह है, वेलवेट की तरह. Can you see? It has a very blurred effect. This is more like a Korean tint, if you will, and this is how it looks. I absolutely love this. इसका texture, इसकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं इसको एक्चुअली कितना पसंद करती हूँ. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये ना ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. ये अभी है, राइट, ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगी, बट जब आप पानी पियोगे या चाय पियोगे या कुछ भी खाओगे ना, ये उतरती जाएगी और आपकी कटलरी पे भी लगती जाएगी. सो द ट्रांसफर इज अ बिग इशू विद दिस वन. बट ये फॉर्मूला बहुत कंफर्टेबल है. लाइक आप इसको जब अप्लाई करते हो ना, यू फील द कंफर्ट ऑन योर लिप्स. लगता ही नहीं है कि कुछ अप्लाई किया. इट फील्स लाइक क्लाउड्स ऑन योर लिप्स एंड इट इज़ रियली गुड इन दैट कॉन्टेक्स्ट. इवन द कलर इज़ वेरी प्रिटी, राइट. तो या आई मीन अगर मैं इसका ट्रांसफर वाला पोर्शन हटा दूँ ना, तो मैंने एक्चुअली इसको बहुत एन्जॉय किया है. मैं इसको बहुत रिलीजियसली यूज़ भी करती हूँ. एंड या अगर ट्रांसफ़र वाला आपके साथ इशू नहीं है, आई वुड से डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. एंड अगर ट्रांसफ़र वाला इशू है तो आई डोंट नो what to say to you, बिकॉज इसका अभी भी आंसर मैं भी ढूंढ नहीं पाई हूँ. बट आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ समथिंग. हो सकता है मे बी in a few days मैं इसका actually कुछ तोड़ भी निकाल लूँ. So we'll see about that then, right? But अभी के लिए I'm really loving this and it's a recommendation from my end, right? So this one was actually for like 1050. Like ये थोड़ी costly है, 1050 rupees की है, 1060 की. But मैंने जब लिया था I think 700-800 में ली थी, off पे चल रही थी. So you can definitely try this out if you want to, okay? So yes guys, this is it for today's video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll meet you in the next video guys. Bye bye.